हेलो स्टूडेंट्स। पैंडेमिक कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन क्लासेस में पुनः आप सभी का स्वागत है। बीएससी थर्ड ईयर फिजिक्स डिपार्टमेंट राजकीय महाविद्यालय के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आज आप सभी को आपके फर्स्ट पेपर के स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में डिग्री ऑफ फ्रीडम को पढ़ाएंगे। तो व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम? It is number of independent motions by which a particle should be dynamic and move without violating any constraints imposed on it। में किसी इंडिपेंडेंट मोशन में डायनेमिक पार्टिकल की डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट की जा सकती है। दैट इज नॉट इक्वल टू n। इट इज नंबर ऑफ वेज or of number of observations. It is n minus 1. There are three types of degrees of freedom. One is monoatomic gas. For monoatomic gas, how you can calculate the degree of freedom? You know, helium, neon, argon, etc. These are monoatomic gases. तो हम डिग्री ऑफ फ्रीडम थ्री डायमेंशनल सिस्टम में किसी भी पार्टिकल को सपोज मान लेते हैं। यहाँ अगर कोई मोनोएटॉमिक गैस का मॉलिक्यूल है तो वो लीनियरली ट्रांसलेशनली एक्स डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है, वाई डायरेक्शन के अलोंग भी रोटेट कर सकता है और जेड डायरेक्शन के अलोंग भी। इट मीन्स translationally the degree of freedom for monoatomic gas is 3। तो मोनो गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 3 होगी रेखीय गति करने वाले पार्टिकल के लिए। अगर कोई डायनेमिक मोशन इस तरीके से है पार्टिकल का तो एक्स और वाई डायरेक्शन के प्लेन में है इस तरीके से, और वो इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है, मतलब वो इट विल रिजॉल्व आइदर बाई एक्स डायरेक्शन और बाई वाई डायरेक्शन। उसके कंपोनेंट्स उस समय लेने होते हैं। इट मीन्स वी कैन नॉट कैलकुलेट द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर सच टाइप ऑफ पार्टिकल, डायनेमिक पार्टिकल्स। डिग्री ऑफ फ्रीडम केवल फ्रीली इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स के लिए, जो इंडिपेंडेंट डायनेमिक मोशन कर रहे हैं उन्हीं के लिए कैलकुलेट की जा सकती है। तो दिस टाइप ऑफ dependent motion, this direction of the body can be resolved either in x or in y direction, so it is not independent। And what is it is for diatomic gas? Diatomic gas होती हैं H2, O2, N2 etc। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हम डायटोमिक के लिए कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखिए, अगर कोई डायटोमिक मॉलिक्यूल इस तरीके से एक्स एक्सिस के अलोंग रखा हुआ है तो ये ट्रांसलेशनल मोशन तो तीनों डायरेक्शन में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस के अलोंग करेगा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ट्रांसलेशनल मोशन इज 3। एंड अगर ये एक्स डायरेक्शन के अलोंग रखा हुआ है तो इसका रोटेशनल मोशन वाई और जेड एक्सिस के अलोंग हो। इट मीन्स द
degree of freedom for rotational motion is 2 due to its rotation about by and z axis because it is placed along this x direction. Okay, so the degree of freedom for this diatomic gas you can calculate by adding these two: translational degree of freedom for translational and degree of freedom for rotational motion. It is 3 and 2. So it is the degree of freedom for diatomic molecule is 5. And how you can calculate it for polyatomic gas or triatomic gas? These are triatomic gases O3, CO2, CH4, etc. These are triatomic gases. Suppose this is a diatomic a polyatomic body placed along this direction. Oh, the translational part of the rotational motion, this motion is 3, and this body will rotate about by and z axis if it is placed along x direction. So the degree of freedom for rotational motion is 2. इसी तरीके से वाइब्रेशनल मोशन भी होगा पॉलीएटॉमिक या ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए, तो वो उसकी वैल्यू 1 होगी. इसलिए द टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर पॉलीएटॉमिक और triatomic molecule will be the degree of freedom for translational and degree of freedom for rotational motion and degree of freedom for vibrational motion. So you can put the value of these three, it will be 6. So the degree of freedom for triatomic or polyatomic gas is 6. Now I will take the law of equipartition of energy. What it is? It is the total energy of dynamical system containing a large number of particles in thermal equilibrium. It is equally distributed in its all degree of freedom, and the energy associated with degree of freedom, it is half kT, where K is Boltzmann constant and T is absolute temperature of the system. What is the proof of this law? Suppose a dynamical system, its degree of freedom is F. You can consider it is the sum of F position coordinates and F momentum coordinates. The F position coordinates are the function of Q1, Q2 and Qf, and the function of momentum coordinates is P1, P2, P3 and so on to Pf. So the total energy, how you can write it? You can write this total energy in this form is the function of this position coordinates and also the function of this momentum coordinates. Suppose it is equation 1. And now if pi be the particular momentum, then the total energy can be written like this: E is equal to epsilon I pi and E dash the function of position moment coordinates and momentum coordinates, where this part of this equation is function of momentum, and this part of this equation E dash is the function of all the position and momentum coordinates excluding the momentum pi for ith particle,
you know it very well. The mean energy by definition is given by, you know it, this formula, well-known formula, and the epsilon bar is E upon n. You can calculate by substituting the value of E and n. So it is equation 3. And now we know that the total energy E is the sum of this epsilon I plus the energy E dash. You can substitute the value of these, we get from equation 3 the value of epsilon bar is this. And since the E dash is independent of Pi, then the value of epsilon I bar you can calculate like this. You can separate these two functions like this from the limit minus epsilon minus infinite to plus infinite. You can separate with the property of the integrals in terms of pi and in terms of position coordinates and momentum coordinates. So these two terms will be cancelled out, and the remaining part is, suppose this is equation 4. Since epsilon I is the quadratic in pi and expressed as, you know, the epsilon I is pi square upon 2m, is energy for ith particle. Suppose it's equation 5, and the value of this momentum you can know. You can write this equation like this, and you can simplify this equation like this, and you can write this equation also, and you can find out the value of epsilon I from this equation like this. Epsilon I is equal to pi square upon 2m, and the value of epsilon I average you can write in this form. Suppose this is equation 6. You can use these two equations 5 and 4. But we know that from the property of the integrals, it is minus infinite to plus infinite x square e to the power minus alpha x square into dx is equal to half of under root pi over alpha cube. And the integral minus infinite to plus infinite e to the power minus alpha x square dx is under root pi upon alpha. So that the value of x is pi upon under root 2m and alpha is equal to 1 upon kt. From equation 6, we get epsilon I var is equal to, you can put the value of these and you can solve this equation from equation 6. So on simplifying, you can get the value of epsilon I bar is half kt. This is the equation known as law of equipartition of energy of classical statistical mechanics, where this epsilon I bar is mean value of energy expressed. It is not in quadratic form. Thank you.